ठीक है. Achha, now this one. So I'll just do one more. Okay, the successive ionization energies. Then we're going to move on to other types of ionization energies. So I've got sulfur. Okay, let's say I'm going to plot the graph for sulfur. So sulfur has 16 electrons and 16 protons as well. So there's one shell. Okay, so let's say that's your shell. There's another one, and then there's a third one. Okay. So let me just rearrange these shells. So this one, and we've got this third one. One second. Okay, so we've got three shells. And hold on a second. And it's got 16 protons in its nucleus. They're the ones that are attracting all the electrons. So 2 electrons in the first one, 8 in the second one. And there's going to be 6 electrons in the last shell. So how would the graph, if you were to sketch the graph, how would it look like? So the graph would have a total of 16 ionization energies. So I'll just extend this a bit further because it has, so this one has 16 ionization energies. So that's 14th, and then 15th, and then there is 16th. So removing the first 6 electrons would kind of be easy, and the ionization energies would be less. Once you try to remove the 7th electron, the 7th electron would be difficult. So on the 7th electron, there's going to be a drastic increase, and that increase would go on till, I think, this point. So there's going to be a rise in ionization energies, and then the last 2 electrons are going to have the highest ionization energies. So the graph sketch would be something like this. That there's going to be a jump whenever there's a change in shell, and you should know what the factors are. Removing the first electrons in the outermost, the distance they're far away, they're more shielded. So it's easier to remove the 6 electrons. First, second, third, fourth, fifth, and sixth electrons would be easy. And there's going to be a gradual increase because only the net positive charge on the ion is increasing. Every time you remove electrons, the ion becomes more positive. So it becomes even harder to remove electrons. Once you try to remove the 7th electron, there's going to be 7th electrons, the 7th and the 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, up till the 14th electron. They would be removed from the inner shell, which is closer to the nucleus. It's going to be less shielded. So it would be harder to remove. So removing these electrons would be harder. And removing the 2 electrons right next to the nucleus, this would be the hardest. So they would have a very large ionization energy. So is this all clear, this thing? You clear it, yes or no? Yes, sir. Yes. Achha, so remember the sketch of what an atom would look like. So what information do we get from this sketch? So what you can get from this sketch is, let's say they don't tell you what the atom is. So what if they haven't told you what the atom is? So you can derive a lot of information about the atom. You can tell the number of valence electrons that the atom has. So that is one information that you're going to get. You can get the total number of shells by looking at the sketch.
I mean, these are the two very vital main informations that you can obtain. Like imagine if you weren't given this atom, you can look at the sketch and you can figure out that that's one shell, that's the second shell, that's the third shell, that's the innermost shell. How many electrons does the atom have in its outermost shell? You can count the electrons with the lowest ionization energies. Same applies to this atom. By looking at the sketch, you can figure out that there are two shells. First shell, second, that's the outermost shell, that's the inner shell. How many electrons does the atom have in its outer shell? That's 7. So you can get all of this information from the sketch. And based on that information, specifically this information, the valence shell electron, based on that, you can figure out the group number. So you can tell which group the atom is by looking at the sketch. Now, this group number is very important because that gives you a lot of information about its chemical properties. I mean, what type of, any reactions, any chemical properties. Like if you know an element is in group 17, you know it's a halogen and it's going to gain 1 electron, it's going to have a -1 charge. So you can guess a lot about its chemical composition, its properties, its bonding, etc. So that's how you figure out what an atom would behave like, by just looking at the sketch. So we'll do that further. But remember this point, valence shell electrons or group number is the most vital information that you get from the sketch. Now, moving on, the next thing that we're going to study in ionization energies is the comparison of first ionization energies down a group. Let's do down the group first. Now, first thing that you should remember is now we're not comparing successive ionization energies. That is done now. So we're not comparing successive. So we're not comparing successive ionization energies. We're comparing atoms down the group. And we're only trying to figure out the first ionization energy, which is how much energy would be needed to remove 1 electron. I'm going to draw a few of the atoms, like let's talk about group 1. So it's lithium with 2 shells. Just 2 shells. Lithium has a total of 3 electrons. The other one would be then after that, you're going to have sodium. Sodium is going to have 3 shells. So there's going to be an extra third shell that would be there. And then let me get this over here. And after sodium, there's going to be potassium. It's going to have another shell. Potassium is going to have 1 extra shell. So that is potassium's 1 extra shell. So I've drawn 3 atoms. And we're going to talk about, and I'm going to fill in the electrons as well. And remember, we're trying to remove just 1 electron from these 3 atoms. So lithium, starting with lithium, let's try and draw lithium. That's 3 protons in its nucleus. And it's got 3 electrons. Sodium over here has 11 protons and it's got 11 electrons. So it's 2, 8, and then there's 1 electron in its outermost shell. And then you have potassium, which has 19 electrons. So it's
it's 19 protons in its nucleus. They are attracting electrons. So 2, then there is 8. Then there is another 8. And then finally you have 1 electron in its outermost. So in all these cases, we are trying to remove just 1 electron, just 1. So first thing, what are the factors that are in play? What's going to happen? But make a rough guess. Would the ionization energies increase or would they decrease when you move down the group? Anyone, what's going to happen? Increase. Increase Oh, means sorry, decrease. It's a decrease. Sorry. Okay. So it's going to decrease. Why? Because it would become easier to remove electrons, right? By just looking at it, you know that the electron is like really far away. So we know that ionization energies would decrease. And it would become easier to remove electrons. So what are the factors in play? Number one, why would they decrease? What's factor number one? Why would they decrease? Because the electron nucleus is दूर हो गए. ठीक है, तो distance of electron from nucleus increases. और क्या? Shielding effect. ठीक है, shielding effect is another one. So ठीक है Sidra. So shielding effect. What about the net positive charge? Is that a factor here? It's constant. Okay, they're all neutral atoms, right? So the net positive charge is not a factor here. It doesn't vary. All of them are neutral. Because you're just trying to remove the first electron, right? So if you're trying to remove just 1 electron, that's not going to be a factor because it's going to be constant. It doesn't change in either of those atoms. What about the fourth factor? वो क्या था कि the fourth factor was about the number of protons. What's happening there? So it's increasing number of protons. ठीक है, so is that a factor in decreasing ionization energies? No, I don't think so. ठीक है, so one of the factor actually goes against this. That protons increase. So ionization energy should also increase. So there's one factor that actually goes against this. Because down the group, the protons are becoming 19 protons would be attracting electrons more strongly. So if you have 19, so if you have 19 protons, the electron attraction would be more compared to 3 protons. So this factor is actually going against it. But there are 2 factors that are supporting it. So overall, the net effect is that the ionization energy decreases because the electron goes further away. The shielding effect increases, so it becomes easier to remove electrons, despite the fact that protons are increasing. So when you have to explain this, you're going to write all these points. Like if I were to make a statement, and remember, you're going to get a very typical question, which almost every time you do get this question. So what you're going to write over here is, what you're going to state is that down the group, atomic radius increases. I mean, you can phrase these 3 points. Remember, you have to be very brief and direct and to the point. So basically, you just have to write all of this that is already given. So I'm just going to write a statement that down the group, atomic radius increases, which is basically distance. So distance of electron from the nucleus, it increases. It increases and shielding effect increases.
So shielding effect से मतलब कैसे? क्या? So मतलब shielding effect से वो होता है ना कि मतलब हमारे न्यूक्लियस को शील्ड कर रहा होता है। हाँ मतलब अगर शीलिंग इफेक्ट ये है ना कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर मैं बहुत सारी चीजें रख दूं, बहुत सारे शेल्स आ जाए, तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, दैट वुड डिक्रीज, राइट। ओके सर। तो शीलिंग इफेक्ट एट डिस्टेंस साथ साथ चल रहे होते हैं। आई मीन दे बोथ डिफरेंट फैक्टर्स, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता है तो शीलिंग भी बढ़ जाती है। क्लियर है? एग्जैक्टली। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता ही तब है जब शेल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, anyways, so you have down the group atomic radius increases and shielding effect also increases. So ionization energies would decrease, or it would become easier to remove electrons. Despite the fact कि एक factor उसको support नहीं कर रहा, despite the fact that protons are increasing or the nuclear charge is increasing. सर ये पार्ट मैंडेटरी है लिखने के लिए मतलब प्रोटॉन वाला? हाँ सर यही मतलब क्वेश्चन आएगा क्या? मतलब मैंडेटरी, असल मैंडेटरी तो कुछ नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, ठीक है। बट remember, you're not sure कि अगर sometimes they give you a 4-mark question, sometimes they give you a 2-mark question on this. So 2-mark question में they're just looking for 2 points, 4-mark question में they're looking for 4 points. But to be on the safe side, you're always going to write the complete answer, ठीक है, because you सर never. क्वेश्चन ये होगा कि हाँ why the ionization, क्वेश्चन तो यही होगा ना सर कि why the ionization energy decreases down the group. हाँ, या वो आपको ये भी नहीं कहेंगे ना कि why is it decreasing, वो कहेंगे कि क्या होता है, what happens कि down the group, तो आप फिर सारा लिख दो कि it decreases. So it's usually a 4-mark question, ठीक है. But remember, you can't take the risk of just writing a few points and ignoring the other ones. कि even if they're giving lesser marks, तो you're not sure कि वो किस चीज पे marks दे रहे हैं, ठीक है. So you write everything, like the whole thing in this case, and you're going to mention kg protons जो है वो, so despite the fact that nuclear charge is also increasing, so one factor is actually going against that, ठीक है. Clear? Yes sir. So anyway, so this applies to all groups. I mean, I just gave an example of group 1. Same thing would happen to group 7 as well. Same thing would happen to group 4 as well. So it's going to be the same answer, same question. This would be a very typical question. So इसके बाद ये कि the next one is across the period. What happens when you move across the period? Now, across the period, you've got lots of atoms. So first thing, I'm going to draw across the period. So and remember, we're talking about the first ionization energy. So I'm just trying to remove the first electron. That's it. No more. So just the first electron. Let me see if I have atoms across the period, if I can find an image. Okay, this looks fine. It can't be that, actually, this one. Yep, this is better. So I'm just going to copy this and the protons are not mentioned, so let's just use this. So this is what is happening to atoms across the period. You've got lithium. So I'm going to write the number of protons next to them.
So the first one is I've got lithium, which is 3 protons. Then I have beryllium, which is 4 protons. Then I have boron, which is 5 protons. And then 6 protons. Then I have 7 protons. Then 8 protons. Then 9 protons. And at the end, I have a total of 10 protons. So the number of protons are constantly increasing. So this is what happens across the period. First thing is that they have the same shells. Same number of shells, exactly same number of shells. So they have same number of shells, which basically means that they all have the same shielding. That's number one. So that is not a factor. Then what happens is across the period, the protons increase. So your protons or nuclear charge increases. So that increases across the now based on that, the ionization energies should increase as well. So ionization energy, it should increase. Right? Because more protons means the electrons are more strongly attracted, which is why the size of the atom is also becoming smaller. The reason the size of the atom is smaller is because 3 protons, वो अपने electrons को, they're not going to attract the electrons very strongly. But if you have 7 protons, like in the case of nitrogen, the electrons would be more strongly attracted. So the size of the atom starts to shrink. It starts to decrease. Why is fluorine over here so small? The reason it's small is because it's got 9 protons. It attracts its electrons very, very strongly. And neon over here is even smaller. So when you move across the period, the sizes of the atoms, they start to decrease. Is this point clear? You clear? Yes, sir. So the atomic radius or the distance gradually decreases. And remember, it's a gradual, it's not an abrupt decrease. It's a Sir, Haji. So the size of atom decreases across the period? हाँ मतलब वैसे तो शेल सेम है ना, इसके 9 प्रोटॉन्स है और इसके 3 है, लेकिन it's got 2 shells. This one also has 2 shells. ठीक है, तो डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि 3 प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को, they're not attracting the electrons very strongly. तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो दूर दूर होंगे. 9 प्रोटॉन्स होंगे ना तो +9 चार्ज है. +9 चार्ज जो है that would attract the electrons very strongly. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना. क्लियर है? Yes, sir. So the atomic radius or distance gradually or slightly decreases when you move across the period. So it gradually decreases. And this one is so this one is so that means ionization energy would increase. It would become harder to remove electrons because the electrons are becoming closer to the nucleus. Okay, so the third factor is also saying that. What about the next one after that? अच्छा, what is Shielding effect. नहीं, वो तो हो गया, पहला हो गया. और कौन सा factor है? The charge. Net positive charge, that is not a factor over here क्योंकि they're all neutral atoms, right? So this over here is not a factor. Same as shielding. Shielding is not a factor. The overall effect, हाँ? ऐसे जैसे ये हम ऐसे जा रहे हैं, ये Na से जब वो क्या बोलते हैं फ्लोरीन तक से, तो मतलब चार्ज तो फिर भी इंक्रीज करता है, मतलब +1 +2 +3, वो नेट शिफ्ट नहीं करता.
नहीं वो तो उसको न्यूक्लियर चार्ज है ना, डिफरेंस है ना. न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. नेट जो है ना वो इज द चार्ज ऑफ द होल थिंग. ठीक है. तो न्यूक्लियर चार्ज So, चार्ज से हम बता सकते हैं कि मतलब हाँ ये मतलब इंक्रीज हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी. हाँ. प्लस वो एटम भी छोटा होता जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन करीब होता sir, हाँ जी. सर जब हमारे पास एक जैसे एक अमाउंट ऑफ शेल्स है, सेम अमाउंट ऑफ शेल्स है हर मतलब अक्रॉस द पीरियड, हाँ. तो हमारे पास किस तरह से मतलब एटॉमिक रेडिया मतलब डिक्रीज कर दी जाएंगी? नहीं वो उसके उसके ऊपर होता है, डिपेंड कर रहा होता है प्रोटॉन्स के ऊपर. कम प्रोटॉन्स होंगे ना तो शेल्स जो है वो थोड़े दूर दूर होंगे ना, क्योंकि दे नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली. मतलब इसका +3 चार्ज. ओके. लेकिन अगर वो 9 प्रोटॉन्स होंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको खींच के अपने साथ जोड़ लेगा, तो वो शेल करीब आ जाएगा. क्लियर है. यस सर. तो अक्रॉस द पीरियड रिमेंबर दिस कि जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो कम होता रहता है, इवन दो द शेल्स आर द सेम, लेकिन द एटम्स एक्चुअली बिकम स्मॉलर. फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है लेकिन फिर भी इट्स स्मॉलर, क्योंकि the electrons would be more tightly attracted or more closely attracted to the nucleus. अच्छा अब ये कि so what is the net effect? Ionization energy, the general trend is that ionization energies would increase. So remember it's when we talk about this is the general overall trend, and that is that ionization energies increase. तो इसका अगर हम ना ग्राफ बनाए across the period, so remember the factors. I mean, make sure you remember the factors. So if I make a graph of all of these across the period, we know okay, the ionization energy should increase. So let's say we have all these atoms with us. Lithium wale kar lete hain. I've got lithium. So lithium, beryllium, boron. Then I'm going to have carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Okay, that's 8. So let me write this down. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. And neon. So the general trend in the first ionization energies should be that they should increase. So the general trend should go upwards, right? That they should increase. And they do increase, but they don't increase in this manner. What they do is they increase in this manner. What happens is the ionization energy increases from lithium to beryllium, and so it increases from lithium to beryllium, and from beryllium to boron it decreases. Then from boron to carbon to nitrogen it increases again. And then at oxygen it dips again. And from oxygen to fluorine to neon it increases again. So that is how it's increasing. The general trend is still there, but it's not a straightforward general trend. It is increasing, but there are a few dips. There are some dips that are happening at boron, which is group 3. And there's another dip that's happening at oxygen, which is group 6. So you are getting 2 dips in ionization energies. So we have the general trend, but there would be dips that you're going to experience at group 3 and group 6. So the question is, why are there dips happening? We need to explain, we need to give an explanation. So this is something that is very frequently going to come in your exam. So
So explain the decrease in first ionization energy at group 3. In group 3. So why is there a dip? So let's talk about that. I say general trend समझ आ गया? Is that clear? The general trend. Yes, sir. अच्छा, अब decrease group 3 पे मसला क्या होता है group 3 के ऊपर? So let's start with group 1. Let's start with lithium. यहाँ पे ना orbitals आ जाते हैं. Lithium is 3, so it's 1s2 and 2s1. Then you have beryllium, which is what? Beryllium is 4 electrons, so it's 1s2 and 2s2. And then I have boron, which is group 3. Boron is 1s2, 2s2 and 2p1. तो मसला क्या हुआ है? What happened at boron? Boron के ऊपर the problem is you've got more subshells now. अगर subshells ज्यादा हो जाएंगे nucleus के अंदर, so the nucleus is going to be surrounded by more subshells and there's going to be more shielding. So at boron, compared to beryllium, what happens is, and this is the reason that you're going to write, कि भाई पहले you were removing electrons from the 2s, which was close to the nucleus. In the second beryllium over here, you were also removing electrons from the 2s, which was also close to the nucleus. Now all of a sudden, you're removing electron from a higher energy p subshell. और वो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा shielded है because subshell ज्यादा हो गए. So the nucleus is more surrounded by subshells, so it becomes easier to remove electrons. So electron in boron is removed from a higher energy p subshell. So it's removed from a higher energy p subshell, which is slightly further away from the 2s subshell. Yeah, 2p लिख लेते हैं to be more specific. So which is further away compared to 2s subshell. And is more shielded. So electron in boron becomes for a very minute instance, it becomes easy to remove electrons in boron. Because lithium, beryllium electrons were removed from atoms closer to the nucleus, and all of a sudden the electron is being removed from a subshell that's slightly further away, just very slightly. So it becomes slightly easier to remove electrons from boron because the electron is further away compared to the 2s subshell, and it's got more shielding as well. ये बात clear है सारों को? Is this clear, Sidra? Oswa? Amna, is this clear, Alicia? Yes, sir. चलिए उसके बाद. So remember this specific, I mean, this is a very important explanation because it frequently appears in your. Sir? हाँ जी. सर ये मतलब अगर करते हैं शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ना. नहीं मतलब ये बात सिर्फ बोरॉन पे अप्लाई, मतलब it's not a factor otherwise, सिर्फ बोरॉन के लिए कि मतलब आप लिथियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, बेरिलियम से, बोरॉन से एकदम से थोड़ा सा आसान हो गया इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. क्यों हो गया? क्योंकि एकदम से बोरॉन पे ना वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे चला गया. इट्स इन द 2p सबशेल इंस्टेड ऑफ द 2s सबशेल, तो वो थोड़ा दूर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो गया. समझ आई बात?
तो Yeah. अच्छा, the point is कि usually आपके पास 4 factors होते हैं. ये जो subshell वाला factor है, that's not it doesn't apply a lot. But there's not going to be a very large difference due to the subshell factor. So the subshell is not really a factor. It only appears or matters in this specific case. When you have to explain the decrease in first ionization energy in group 3. और फिर इसी तरह ना they're going to ask you कि भाई what happened at oxygen, कि बढ़ी थी कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन में भी बढ़ी थी, तो ऑक्सीजन के ऊपर एकदम से कम क्यों हो गई है? क्योंकि हमने तो जनरल ट्रेंड देखा था कि it should increase. So why is there a dip at oxygen? So that's the second one. कि explain the decrease in ionization in first ionization energy in group 6. ठीक है, that's the second one. Okay. अच्छा, explain the decrease in first ionization energy in group 6. So what happened? What happened there? So in this case, again, I'm just going to compare it with I'm going to compare it with the previous ones. कि भाई ज्यादा हो रही थी, फिर दोबारा ज्यादा हो रही थी, फिर एकदम से कम क्यों हो गई है, और फिर ज्यादा होना शुरू हो गई है. ठीक है. So let's talk about carbon, nitrogen, and then oxygen. What happened at oxygen? So carbon's electronic configuration is 6 electrons. So it's 1s2, 2s2, and 2p2. So 2p ko I'm going to expand it. I'm going to write 2px, 2py, and 2pz. So the electronic configuration is going to be 2p2. So it's 1, 1, and 0. Then the next one, you have nitrogen. So nitrogen is 7 electrons. So the electronic configuration is going to be 1s2. And then it's going to be 2s2. Then it's going to be 2px, 2py, and 2p. So it's going to be 2p3. So 1 electron in each one of them. Ab aa jao dip pe. Why is there a dip at oxygen? So what happened at oxygen? What went wrong with its electronic configuration or its subshell? So it's 1s2, then it's 2s2. Then it's going to be 2px, 2py, and 2pz. And this time it's going to be 4 electrons. So it's going to be 2, 1, and 1. I say anyways, so just focus on the p subshell. You're trying to remove electrons from the p subshell. Now I'm trying to remove electrons from the p subshell. Now in this case, if you look carefully, electrons are being removed from a half-filled orbital. Like I'll remove electrons from the 2p. So it's just got 1 electron. So I'll remove that. I'll remove an electron from a 2p. So it's going to be removed from any one of the identical p orbital, but it's half-filled. Now all of a sudden over here, electron is being removed from a p subshell that has 2 electrons in it. So it's going to be easier to remove electrons. Why? Because the 2 electrons are going to repel each other. Remember, the 2 electrons in the same orbital would be pushing each other away. So it would be kind of easy to remove electrons. So in oxygen, what you'll write is that the electron is removed from a paired p subshell. From a paired p subshell. So because it's being removed from a paired p subshell, so due to repulsion, which is known as spin pair repulsion, or you can say that both electrons are repelling each other. So due to spin pair repulsion, remember I had previously told you that 2 electrons in the same atom have opposite spins. So I'm going to call it spin pair repulsions, that both electrons are trying to
what they're trying to do is they're trying to knock each other out. So due to spin pair repulsion, it becomes easier to remove electrons, or the ionization energy decreases. I mean, is this point clear? Yes, sir. ठीक है. And always write a comparison as well. Ionization decrease. Sir? क्या चीज? So ionization energy decrease आपने लिखा हुआ है. हाँ, डिक्रीज हो रही है ना ऑक्सीजन में. आसान Sir? हो. हाँ जी. सर वो आपने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके डायपोल्स होते हैं तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो उस तरीके से अट्रैक्शन नहीं होगी इनके बीच में? नहीं, उसका मैंने बताया था कि वो जो फोर्स और रिपल्शन होती है ना, वो मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है. लेकिन वो अभी भी फोर्स और रिपल्शन ही होती है. मतलब पहले फोर्स और रिपल्शन ज्यादा थी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं. नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, राइट? या तो वो डायपोल ऑपोजिट होने की वजह से ना, वो जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती थी ना ऑपोजिट होने से, उससे होता था कि वो थोड़ी सी अट्रैक्शन भी क्रिएट हो जाती थी. तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पहले इतना रिपेल नहीं करते थे, लेकिन कर वो अभी भी रिपेल ही रहे हैं एक दूसरे को. समझ आइए बात? यस सर. तो उससे वो मिनिमाइज होती थी, कम होती थी, लेकिन ये नहीं होता था कि खत्म ही हो जाती थी. क्लियर है बात? तो इसका मतलब है वो स्पिन पे रिपल्शन होगी, लेकिन थोड़ी होगी. तो लेकिन जो भी है, रिपल्शन तो है ना. रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ठीक है. तो कंपेयर टू नाइट्रोजन, वेयर तो इधर हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं. So compared to nitrogen, where electrons are removed from a half-filled p orbital. So इसका इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा क्योंकि वो रिपेल कर रहा है, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी. हाँ, क्योंकि वो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे बाहर, तो इसलिए वो आराम से निकल जाएगा. ठीक है. अच्छा, वे इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल. ये इनमें वैसी कंपैरिजन के लिए कि ऑक्सीजन का तो पता लग गया कि क्यू कम है, तो उस कंपैरिजन भी दे दिया कि नाइट्रोजन से पहले था, उसमें इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर रहे थे ना, तो वन ऑर्बिटल जस्ट हैड वन इलेक्ट्रॉन. तो पीछे से कोई और इलेक्ट्रॉन उसको धक्का नहीं दे रहा था, बाहर पुश नहीं कर रहा था, बिकॉज द ऑर्बिटल हैड जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन इट. ठीक है, क्लियर है बात? यस सर. जो इससे तो मतलब, सर हाँ जी. सर तो क्या हाफ फील्ड पे ऑर्बिटल में फिर एज कंपेयर टू मतलब कम स्पिन पे रिपल्शन होगी ना? हाफ फील्ड में तो स्पिन पे रिपल्शन है ही नहीं ना, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं. मतलब ओके. पीजेड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको कोई पुश नहीं कर रहा बाहर. मतलब देयर इज नो वन रिपेलिंग इट, क्योंकि पी वाई वाला इलेक्ट्रॉन तो किसी और एक्सेस पे ना, वो तो कहीं और पड़ा हुआ है, और पी एक्स वाला इलेक्ट्रॉन तो कहीं और पड़ा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे मसला होता है, जैसे ही एकदम से ना वो P3 भी हाफ फेल्ड था, P4 पे आके मसला होता है. अच्छा, रिमेम्बर के द डिप ओनली हैपेंस, और ऑक्सीजन के बाद ये फैक्टर क्यों नहीं इशू, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद फिर सारी पेड़ है, तो फिर सारों में ये फैक्टर आ रहा है. तो वो चेंज जो आता है ना, दैट हैपेंस व्हेन यू मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद ये फैक्टर पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एवरी एटम विल हैव दिस फैक्टर. तो उन तीनों का आपस में जब कंपैरिजन होगा, तो फिर ये फैक्टर वुड नॉट काउंट, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अपीयरिंग इन ऑल ऑफ देम. लेकिन there's going to be so just remember the dips over here. Boron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम से आप रिमूव कर रहे थे. रिमेम्बर, you never talk about subshells unless you're talking about these two. ये जो डिप्स है ना, इनके बारे में. तो इसका था कि what we studied was कि you lithium, beryllium, boron, removing electrons एकदम से, you removing electron from a orbital
or subshell which is further away and which is more shielded as well. So all of a sudden the removing electron part becomes kind of easy. ठीक है? एल्युमिनियम और बोरॉन का सेम ही रीजन है ना? किसका? एल्युमिनियम और बोरॉन का। हाँ, वो एक मिनट मेरा ग्राफ बता देता हूँ कि हर पीरियड का सेम होगा स्केच, ठीक है? So for example, ionization energies across the period. बोरॉन और एल्युमिनियम। हाँ हाँ, वो तो सेम होगा। ये जैसा है ना ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ कर लेते हैं अगर खुल जाए। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं कॉपी। नहीं, नॉट दिस वन, ये वाला। इसमें लाइंस बनी हुई, ये वाला कर लेते हैं। ये ठीक है। अच्छा, ये इस थोड़ा सा 5 मिनट और दे तो ये हम डिस्कस कर ही लें। तो रिमेम्बर एवरी ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नीचे वाले पीरियड की भी एग्जैक्टली सेम होती है। रिमेम्बर वो हमने ग्रुप में कहा था कि विद इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द सेम। तो जब आप नीचे की तरफ मूव करोगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वुड रिमेन द सेम। सो द सेम अक्रॉस द पीरियड सेम इशू होगा। सो फॉर एग्जांपल ये किसी ने ना प्लॉट किया हुआ है ऑल ऑफ द वैल्यूज। सो दिस इज पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं है। देयर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज हीलियम, तो देयर इज नो डिप्स ओवर देयर, ठीक है? सो इट्स जस्ट हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है। सो हीलियम इज गोइंग टू हैव अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, देन पीरियड नंबर 2 स्टार्ट हो गया। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन पे डिप। बोरॉन के बाद आ रहा था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे डिप, फ्लोरीन एंड नियॉन। फिर अगला पीरियड स्टार्ट हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर उसके बाद आई थिंक फॉस्फोरस, ये कौन होगा? फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है? फिर यू हैव पोटेशियम, कैल्शियम, ये बीच में यू हैव ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है? इग्नोर दोस ट्रांजिशन मेटल्स, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स एट द मोमेंट, ठीक है? बस ये याद रखना कि इट्स रिमेंबर द ट्रेंड इज एग्जैक्टली द सेम। वही ट्रेंड चल रहा है कि ग्रुप 3 पे देयर इज अ डिप और ग्रुप 6 के ऊपर देयर इज अ स्मॉल डिप, एक्सेप्ट ये बीच में ना 10 ट्रांजिशन मेटल्स आ गए, ठीक है? The next, so और एंड में फॉर बिगर एटम्स इट काइंड ऑफ जस्ट गोज, बड़े एटम्स को तो वैसे ही नहीं पढ़ना आप, बस ये पहले 3 पीरियड्स तक रहो, ठीक है? सर हाँ जी। सर ये अगर हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर एक मतलब एक ही मतलब कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो जो बाकी जो फ्लोरीन होते हैं उनके अंदर तो 2 या 3 मतलब कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, उनका क्या होगा फिर? उसमें भी स्पिन पे रिपल्शन होगी ना। ओके, और लेकिन ग्राफ सेम रहेगा। हाँ, लेकिन फिर वो ऑक्सीजन के बाद ना रिलेटिव जो कंपैरिजन होगा, स्पिन पे रिपल्शन यहाँ पे भी है, अब स्पिन पे रिपल्शन अगले में भी है। तो वो फैक्टर पे होगा ही नहीं ना, काउंट ही नहीं होगा ना। मतलब उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों के अंदर ही स्पिन पे रिपल्शन है। क्लियर है बात? यस सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं कह रही थी नियॉन और क्या बोलते हैं एनए का क्यों डिफरेंस आ रहा था डिप में। अच्छा हाँ, अब वो ये कि अभी हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं। मतलब किधर पढ़ा, ये पढ़ा डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, डिक्रीज होती है, ठीक है? तो जब आप निचले पीरियड में जाते हो ना, तो होता ये कि डाउन द ग्रुप लिथियम ऊपर है, फिर Na और पोटेशियम, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जीज को क्या हो रहा है, कम होती जा रही है, ठीक है? वही बात इस पे अप्लाई होगी। नोबल गैसेस पे डाउन द ग्रुप जाओगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन कम होती जाएंगी। तो बेसिकली वो ट्रेंड एग्जैक्टली सेम है, बस अगला जो पीरियड होगा ना वो डाउन द ग्रुप है। मतलब डाउन द ग्रुप आ गया ना, आप थोड़े नीचे चले गए, तो इट्स गोइंग टू हैव द सेम ट्रेंड बट इट्स गोइंग टू बी लोअर देन दिस। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उससे, क्योंकि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, लेकिन द ट्रेंड वुड बी एग्जैक्टली द सेम। समझ आइए बात? जी सर आगे। ठीक है, सो रिमेंबर अक्रॉस द पीरियड यू हैव दिस ट्रेंड। फिर उसके बाद निचला पीरियड आ जाता है, यू स्टिल हैव द सेम ट्रेंड।
एक्सेप्ट कि वो थोड़ा सा लोअर होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जीज आर लेस। तो हर ग्रुप की ना ये अगर ये कौन सा, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो वो नीचे जाती जा रही है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। कौन सा? क्या क्वेश्चन आ सकता है कि नियॉन और Na में डिप में इतना फर्क क्यों है? नियो वो आ सकता, लेकिन पता होना चाहिए कि जब वो पीरियड एंड होता है ना तो एकदम से अगला जी पीरियड सर। स्टार्ट हो रहा है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डिप। जी असल में जी सर। कभी कभार अभी क्वेश्चंस करेंगे ना पास्ट पेपर, तो पास्ट पेपर्स व्हाट दे डू इज के समटाइम्स दे गिव यू अ पार्शियल ग्राफ, कि फॉर एग्जांपल उसने ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इतना लार्ज जो ड्रॉप आ रहा है ना, ये तब आता है जब वो पीरियड स्विच होता है, चेंज होता है, कि आप एक पीरियड के एंड तक पहुंचे हो, अब अगला पीरियड स्टार्ट हो गया, दोबारा से नीचे से कहानी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ओके सर। तो चलिए लेट्स और रिमेंबर कि इससे कंफ्यूज नहीं होना, वो बीच में 10 ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, अदरवाइज द ट्रेंड इज ऑलमोस्ट द सेम। तो let's continue with past papers in the next class. We'll try and do those now. ठीक है, वो ज्यादा tricky है. They would be, हाँ, आयंस की आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं आयंस की तो हमने कर ली ना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, उसमें आयंस ही तो बन रहे थे, ठीक है ठीक है। वो एक ही एटम में से इलेक्ट्रॉन मूव किए जाते हैं। चलो ठीक है, सर हाँ जी। सर वो जो मतलब अबंडेंस आती है एटम्स की, वो इस टॉपिक में है या मतलब कोई और टॉपिक? वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ हाँ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके साथ जो अबंडेंस आती है हमारे पास कैलकुलेट करने को। हाँ, नहीं वो मतलब ओके, इसी के उसका अंदर इससे होता इससे है। तो कोई मतलब वो एक अलग सी, आपके समझ लो कि एक अलग सी सब टॉपिक, उसका इन सारी चीजों से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ओके मोल्स मोल्स के साथ कर लो कि AR निकालना होता है, ठीक है, तो उसका इससे डायरेक्टली तो कोई लिंक नहीं है, वो हम कर लेंगे, ठीक है, अलग से। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सर हाँ जी, इसको फिर अपलोड कर दे। मैं करता हूँ, ठीक है, मतलब कल सुबह ही ओके होगा, सर। क्योंकि 11 बजे तक ये प्रोसेस होगी वीडियो, ठीक है। ओके सर। चल ओके, अल्लाह हाफिज।